Here we again in the chapter continuity and differentiability. Yesterday we have solved some questions of exercise 8, I think 5.1, and in this very exercise I am taking one more question, that determine if defined by that x square into sine 1 of 1 by x if x is not equal to 0 and fx is equal to 0 if x is equal to 0 is continuous function. You have to determine, check whether the function is continuous or not. Okay, is continuous, you have to determine. Now here in this question, that definition 1 by x square sine 1 by x, whenever you go for the limit, what you have to do, this is the product of two different functions, sine x square and sine of 1 by x. So this is equal to limit x tends to 0 x square into limit x tends to 0 sine of 1 by x. Now 1 by, if x tends to 0, you will find that 1 by x is not defined. Whatever, here we should say, you know that the value of sine, what about this function? I am just coming on this one. The limit of this function is 0, and now limit as x approaches some values as 0 or whatever, here is a number. Since x is not going to be equal to 0, so 1 by 0 is not here. It is just about before infinity. So it's a real number. It's a real number. Whatever, suppose it is just less than 0 or just greater than 0. So it's a real number, and we know that the value of sine ranges from -1 to +1. So a number, you can say, you write down a number lying between -1 and +1, including these two also, so you will get 0. If this is not have been given, only this, then we cannot say that this is a limit of this function exists, because it is oscillating function, oscillate कर रहा है, -1 से 1 की तरफ oscillate कर रहा है. So we are not getting to exact value, so the limit of this function does not exist. But due to this, and whatever the value of sine of 1 by x is here, -1 से लेके 1 तक के कोई भी वैल्यू होगा, 0 into something becomes 0, and the value of the function is given to be 0. So what we say, that limit of the function and value of the function are equal, therefore the function is continuous. The function is continuous. So I just try to give one more solution, that question number, it is question number 24, and now we are moving towards differentiability. Differentiability you have studied in class 11 also. Okay, now we are moving towards differentiability, and I just try to recall that if f be a real valued function, f be any real valued function, so what is derivative of a function? You will see that at x is equal to a, limit h tends to 0, f of a plus h minus fa by h is equal to, this is right hand limit, f dash a, limit h tends to 0, f a minus h minus fa by minus h. Actually minus h is 1 minus h minus a, it's minus a plus a minus h minus a is minus h, a plus h minus a is plus h. This is y2 minus y1 by x2 minus x1. x2 is a plus h, x1 is a. Here x2 is a minus h, x1 is a. So x2 minus x1 is minus h. This is supposed to be said to be left hand limit and left hand derivative, and whenever you find that right hand derivative as well as left hand derivative are equal, we say that
f is differentiable, f is differentiable at x is equal to a. This is differentiability at a point. This is differentiability at a point if these two limits exist. And another, in domain a is replaced by x. If limit h tends to 0, fx plus h by fx by h exists, then this is called derivative of the function f dash x. Or you can say if y is equal to fx, you will say that this is dy by dx, or this is y1, or this is y dash, or it is d of y. These are the different way to express the differentiability of a function. You have all studied in class. You have studied that if y is equal to xn, y equal to xn, then dy by dx is nx to the power n minus 1, y equal to some constant, dy by dx is 0, y equal to sin x, dy by dx is equal to cos x, y equal to cos x, dy by dx equal to sin x, y equal to tan x, then its differentiation with respect to x is sec square x, y equal to cot x, then dy by dx is nothing but minus cos x square x, y of cos x is dy by dx is minus sin x, all cos, cot and cos x, the differentiation is some negative, y equal to, if it is sec x, then dy by dx is sec x into tan x, again y is cos sec x, then what is dy by dx? Dy by dx is minus cosec x cot x. You all these standard formula you have studied in class 11. Also there is a question, as I discussed, that there is a chain rule. You also studies product rule. If f is a function of two different product u and v are also the function of x, then what is df by dx? It is v into du by dx plus u into dv by dx. If f is a function of two quotient of two function u by v, u and v are also the function of x, then what is df by dx? Or you can say write down y. So what is dy by dx? Y. What is dy by dx? So dy by dx is v du by dx minus u dv by dx by v square. Okay, and there is a question in class 11, differentiate sin to the power nx, ax plus b to the power n, and in class 11 there is no chain rule. There is no chain rule, but you may study about that. It is in class 12. So how can you find the differentiation of any non-standard form? जैसे sin x का तो निकाल लिया, sin स्क्वायर x अगर होगा तो क्या करेंगे? ax प्लस b का तो निकाल लेंगे, लेकिन ax प्लस b का पावर अगर n होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये देखना है. तो we are going to use here chain rule. What is chain rule? Suppose y is given to be ax plus b to the power n. We don't know. We know that if y is xn, then we know that dy by dx is n into x to the power n minus 1. How can we find? So here we are going to let y is equal to un. I am just taking ax plus b as u. U is what? Ax plus b. And representing y in terms of u. So y becomes a function of u. Y becomes a function of u, then we can use here a standard formula dy by du as du of u to the power n, standard formula n into u to the power n minus 1. What is u? It is ax plus b. So n into ax plus b whole to the power n minus 1. Now y हमें निकालना है dy by dx.
So again we have to go for this one. As u is equal to x plus b, u is a function of x, so here we can find du by dx, that is ddx of ax plus b. What is ddx of ax plus b? ax का a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, so a. तो finally dy by dx becomes dy by du into du by dx. du by dx is a, so a को पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, और then dy by du n into ax plus b to the power n minus 1. So this is the formula. This is the differentiation of function ax plus b to the power n by using chain rule. You can take some another example, okay, like sine square y. This is a function. Now इसको आप क्या करो, u मान लो, और आपको निकालना है dy by dx. dy by dx. How can you find dy by dx? तो आप सबसे पहले निकालो du by dx. du by dx of sine square y. Sine square we don't know, we just take v equal to sum square, u is equal to, sorry, u है v square. So ddvy, ddv कर लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है ना, ddv कर लेंगे sin square y का, यानी v यानी 2v. 2v means 2 sin square y. But v is what? v is what? Sin y. So here you can find dv by dy, that is cos y. That is cos y. And since y is other than, what is dy by dx? It is dy by dx. So finally du by dx, यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे इसका dy by dx, अगर निकालना हुआ तो ये निकलेगा du by dx, सॉरी कहेंगे du by dx निकलेगा du by dv, dv by dy and then dy by dx. du by dv is 2 sin square y, sorry 2 sin x only, v square is not, v square का होगा 2v, तो 2 sin y and then cos y and finally dy by dx. तो ये क्या हो जाएगा, sin 2y dy by dx. Here you are going to use this very particular thing in implicit function. In implicit function we have to discuss 6 more differentiation of inverse trigonometric function, sin inverse x, sin inverse y and etc. So here y is equal to sin inverse x and so on. X equal to sin y. Now here we differentiate it with respect to y. What is dy by dx? Okay, differentiating with respect to x. So dy by dx, यानी ddx of x is ddx of sin y. So ddx of x is what? 1. Here sin y, y is other than x and we have to differentiate it as x with respect to x. So first you think, if here it is sin, what is the differentiation of sin x with respect to x? It is cos x. So write down cos y. And since y is other than x, so this is chain rule. Make it, means here you can say function is not in terms of y, let u is equal to sin y, and you are required to find du by dx. You are required to find du by dx. So let u is equal to sin t, where t is equal to y, sin y, u is equal to sin y and y equal to x, y equal to x. So क्या होगा ये, du by dy cos y और dy by dx तो 1, dy by dx क्या हो जाना है, लेकिन y in terms of y, so dy by dx is dy by dx. Okay, dy by dx is dy by dx. Simply we are finding chain rule. So what is dy by dx? हमें निकालना है dy by dx. So dy by dx is 1 by cos y, but the function is given in terms of x. So what is cos y? It is root under 1 minus sin square y. And what is sin y? Sin y is x.
So it is root under 1 minus x square. So differentiation of sin inverse x is 1 by root under 1 minus x square. Clear hai? In the same way, you can find the differentiation of other 5. If y is equal to cos inverse x, you will find dy by dx as minus 1 by this one. If y equal to tan inverse x, you will find that dy by dx is nothing but 1 by 1 plus x square. Let it be x as tan y. So x as tan y, so dx जो लगाएंगे तो क्या होगा, tan y का हो जाएगा 1 by tan y का tan x का क्या होता है, tan x का होता है क्या होता है, tan x का sec square x, और sec square x हो जाना है तो 1 by sec square यानी 1 by cos 1 by sec square, sec square क्या हो जाएगा again 1 by tan square, 1 plus tan square. So you will get this one. You can find this one, ddx of x, ddx of y. So ddx of x is 1, tan y as sec square y, and y का chain rule से dy by dx. So what is dy by dx? dy by dx is nothing but 1 by sec square y. 1 by sec square y. Sec square y is 1 plus tan square y, and 1 plus tan square is nothing but 1 plus x square. So this way you can find tan inverse x, differentiation of tan inverse x as 1 by 1 plus x square. Then if y is cot inverse x, then dy by dx is minus 1 plus x square. If y is sec inverse x, dy by dx is 1 by x square minus 1. You can find it. And if the last dy by dx is minus of 1 by x root under x square minus 1. These are some standard formula in inverse trigonometric function. What you see, that sin inverse x is 1 by root under 1 minus x square, and cos inverse x का differentiation minus of 1 by tan inverse x का differentiation 1 by 1 plus x square, cot inverse x का minus of 1 by 1 plus x square, sec inverse x का 1 by x into root under x square minus 1, तो cosec inverse का dy by dx minus of 1 by x into x square minus 1. So this is the new 6 identities of differentiation. We have to learn about that. Okay. In the next part, in the exercise 5.2 is based on the chain rule. So we just chain rule or whatever you can find the derivative of this function by using some property you have studied in class 11. The very first question is that sine of x square plus 5. So let y equal to sine u, where u equal to x square plus 5. So what is dy by du? It is du of sine u. And sine u with respect to u, you will get cos u. Put the value of u as x square plus 5. And u is the function of x, so what is du by dx? It is ddx of x square plus 5. x square का differentiation 2x और 5 का differentiation 0, so it is 2x. So finally जो dy by dx हमें निकालना है वो पहले होगा dy by du and du by dx. चेन लग गया, कैंसिल नहीं कर देंगे. So dy by dx cos of x square plus 5, it is 2x. So can I write 2x cos of x square plus 5. This is the first question of exercise 5.2. And moving towards some more problem. Here it is in product rule as well as. So sometimes you are not going to do like that one. Directly you can do. Taking the question, if you are going to take the question number 5, sine ax plus b, you have to differentiate sine ax plus b by cos cx plus d. Now function by function, so quotient rule is there. Quotient rule क्या होगा? In denominator the square of denominator.
एंड डिनोमिनेटर को हमने छोड़ा है और डी डी एक्स जो है डिफ्रेंशिएट किया है किसको, न्यूमरेटर को. ओके, देन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा है और डिफ्रेंशिएट किसको किया है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को. इसको लिख लीजिएगा. सो नाउ हियर directly we are going to do by sine of x. Suppose it is x, sine of x is cos x, yani this one. And since it is other than x, so write down here ddx of x plus b minus sine हो गया अपना cos cx plus d. cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस. सो माइनस साइन ऑफ cx plus d and then ddx of cx plus d, and in the denominator it is cos square cx plus d as well. So what is the ddx of ax plus b? It is simply a, because the ddx of b is 0, so a is outside, and here you find that a cos ax plus b cos cx plus d, and minus into minus plus, minus into minus plus sine ax plus b sine cx plus d, and ddx of cx plus d is cx का c और d का 0, so c, so you should write here c, and the whole divided by cos square cx plus d. There is no part common. Here is a, here is c, so there is nothing common. But you can split it one, divide it, you will get cos cx by dx divided by cos square cx by dx. So here's cos ax plus b by cos cx plus d into a. In this part, nothing cancel but sin cx plus d by cos cx plus d becomes tan cx plus d, and नीचे वाला cos cx ऊपर जाके sec x हो सकता है. You can write, but I am going to leave this answer as usual, this one. So this is what using chain rule, and we have used chain rule directly here. Now there is a question that prove that the function mod of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. Mod x minus 1 is not differentiable at x minus 1. Very good. Function is given. देखो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जहाँ कहीं भी ब्रेक हो या कॉर्नर डेवलप हो जाए, लाइक जैसे हमारा ये फंक्शन है और ये कॉर्नर बन गया, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज एट दिस वेरी पॉइंट, या ऐसे हो गया, मान लो ये कॉर्नर बन गया, तो यहाँ पर भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते. भाई ये मूवमेंट तो है, यहाँ से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसको कट कर लेगा ना. सो देयर इज नो टेंजेंट एग्जिस्ट एट दिस वेरी पॉइंट, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस वेरी पॉइंट. So in every modulus function you will get a corner point. X minus 1 you will get a corner point at 1 0. The graph of this function be at 1 0. This one is like that. So यहाँ पर चूंकि corner बन गया तो ये differentiable नहीं होगा. In the last exercise of the we have discussed the continuity of mod x plus mod x minus 1, I think. Yeah, something else. The question is find the all point of discontinuity defined by mod x minus mod x plus 1. Question may be asked, find the continuity and this differentiability of this function. तो continuity तो हमने कल डिस्कस किया था, differentiability डिस्कस हम कर सकते हैं. द सेम पार्ट में उसी डिफिनेशन जो हमने डिफाइन किया था उसको बाइफर्केट किया था, तो उसके बाइफर्केशन में जो पॉइंट्स आए होंगे, एक आया होगा -1, एक आया होगा शायद 3, सॉरी एक आया होगा 0 और एक आया होगा -1. तो -1 पे और -0 पे जब उसकी डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करोगे, यू विल फाइंड दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. सो हियर तो वो डिस्कस करना है. तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर. fx of, as you know, the domain is R.
and we have to discuss the differentiability at x is equal to 1, as x is equal to 1. So here we have to discuss left hand derivative. Limit h tends to 0, f 1 minus h, okay, minus f1 by minus h. Now you see the value of the function is less than 1. Less than 1. So whenever x is less than 1, the modulus is minus of that. So first of all, we are going to put here x के जगह पे 1 minus h and minus 1. 1. f1 is what? So 1 minus 1, and this is minus h. What we will find? We are good doing 1 cancel, modulus of minus h is h, and this is 0 and divided by minus h. So you will find that we have minus 1. Limit of minus 1 and h tends to 0 is minus 1. Okay. Now if you are going to find the right hand derivative at 1, what you have to do? S tends to 0, f1 plus h minus f1 and by plus h. f1 plus h, just replace x as 1 plus h. So modulus 1 plus h minus 1, and again f1 is 1 minus 1, that is 0, and divided by plus h. So here limit h tends to 0, 1 cancel, mod of h is h and minus 0, so don't write 0, and divided by h. So limit h tends to 0, we will get 1. So the limit is 1. What we find? That left hand derivative is minus 1. Limit exists but equal to minus 1. Right hand derivative means here again limit exists but equal to 1. So these two are not equal. Since left hand limit of the function at x is equal to 1 is not equal to right hand derivative of the function at x is equal to 1, so therefore if the given function f is not differentiable at x is equal to 1. जहां कहीं भी होगा, अगर mod x plus 3 होगा तो ये x is equal to minus 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. बट मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. Modulus function is continuous. Still it is not differentiable. But whenever you find a function to be differentiable, you can also find that same function must be continuous. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो आप पाओगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है. और यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया कि ये फंक्शन डिफरेंस मॉडुलस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल तो है, बट ये एक पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो है, बट एक पॉइंट 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. मीन्स we can say that every continuous function need not be differentiable, but every differentiable function must be continuous. This is a property. क्या है property? Property is that every continuous function need not be differentiable, but every differentiable function, क्या कहेंगे इसको, ये प्रॉपर्टी है कि लेट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous, but converse is not true. अभी तक आया तो नहीं है कभी एग्जाम में, बट पूछा जा सकता है. Since the first part is every differentiable function is continuous, so we have to prove it directly, generally prove. But converse is not true. तो जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया था वहाँ से आप किसी भी मॉडुलस फंक्शन, वेरी सिंपल मॉडुलस फंक्शन mod x ले लीजिए और आप उसको कंटिन्यूअस तो कैसे देंगे कि सर वी नो दैट द मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके, एंड नाउ टेस्ट इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to 0. As I tested the differentiability at x is equal to 1 of the function modulus x minus 1, you can take this example too. Previously जो modulus x minus 1 था,
Yes, the function is continuous, but it is not differentiable. First, we are going to prove that every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous. What we have to do? We have to take a differentiable function. Let f be any differentiable function. ठीक है ना? Let f be a differentiable function. Okay, अगर ये differentiable function है तो क्या करेंगे हम लोग कि उसकी डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे ले लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू ए बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट. अब हमें दिखाना है कि ये a पर कंटिन्यूअस भी होना चाहिए. सिंस इट इज डिफरेंशिएबल, सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू a fx माइनस fa और नीचे x माइनस a इज f डैश a. दिस इज अनदर वे टू राइट. जो हम लोग यहाँ पर a माइनस h बाई fa बाई माइनस a करते थे, ये भी एक हुआ आपका डायरेक्ट. नो लेफ्ट हैंड नो राइट हैंड, सीधे डायरेक्टली x टेंड्स टू a y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. As x approaches a, you will find the differentiability of the function at a. You will find a tangent, slope of a tangent at point x is equal to a. This is given. This is given. Function is differentiable, so given. अब हम लोग इसको, जैसे इसको अगर आपको कंटिन्यूअस दिखाना है तो क्या दिखाना होगा? जस्ट यू हैव टू ले आउट द प्लान कि हमें दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए. ये हमें शो करना है, समझ लो. ठीक है ना? यही हमें शो करना है. चलिए, तो पहले क्या करते हैं कि हम लोग इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं. लिमिट का नहीं, एफ एक्स माइनस ए ले लेते हैं. लेट एफ एक्स माइनस एफ ए. और यहां पर ये मान के कि एक्स और ए इक्वल नहीं है, एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं. दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या हुआ कि एक फंक्शन इसके बराबर, और दोनों तरफ आप लिमिट ले लो. एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एफ एक्स माइनस एफ ए. और राइट हैंड साइड में इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, वन दिस वन दिस. तो उसको अलग अलग लिख लो डायरेक्टली. एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, एंड इनटू limit x tends to a x minus a. Clear? Now, so here difference है तो अलग अलग करना पड़ेगा. x tends to a of fx minus limit x tends to a of fa is equal to, ये by definition क्या है? This is nothing but f dash a, and एज एक्स टेंस टू ए माइनस ए. इसका लिमिट ये हो जाएगा, दैट इज जीरो हो जाएगा. तो हमने क्या देखा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स माइनस, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. सो ए अप्रोचेज ए और वॉट एवर एफ ए ऑफ लिमिट ऑफ एफ ए इज एफ ए. कॉन्स्टेंट हो गया ना, तो कॉन्स्टेंट का वही रह गया. एंड जीरो इंटू समथिंग इज जीरो. So from here what we get, that limit of the function as x approaches a is transposing it, you will get fa. यहाँ आ गया ना जो प्रूव करना था. जैसे ही आगे हम कह देंगे कि then f is continuous at x is equal to a. So theorem is proved that every differentiable function is continuous. Now in order to prove its converse, you just take an example of modulus function x and show it that it is not differentiable at x is equal to 0. लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड में -1 उसकी वैल्यू आएगी, राइट हैंड में उसका +1 आएगा हमेशा मॉडुलस का. तो दे आर नॉट इक्वल. सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0. In spite we know that the modulus function is continuous. So in order to prove converse, you will find you have to take any suitable example. Method of giving counter example. जब भी कोई चीज़ को disprove करना हो, we have to take counter example.
बट अगर प्रूव करना हो तो एग्जाम्पल लेके नहीं प्रूव करेंगे, उसको इन जनरल हर डोमेन के हर पॉइंट हर वैल्यूज के लिए प्रूव करना पड़ेगा, करना चाहिए। क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम मोर फंक्शन and here is implicit and explicit function. Implicit and explicit means whenever you find a function can be expressed y in terms of x, it is explicitly expressed. But if somewhere just say x cube plus 3x square y plus 3xy square plus xy cube, अगर ऐसा दिया हुआ हो इज इक्वल टू 0, यू आर नॉट गोइंग, कैन यू एक्सप्रेस x एज टर्म ऑफ y और y in terms of x, then it is explicitly, otherwise you can say that function is not explicit function, it is an implicit function. Implicit function का है मतलब कि जब हम किसी फंक्शन को, जैसे कोई फंक्शन दे दिया x प्लस साइन एक्स वाई फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, अब अगर हम y इक्वल टू समथिंग करेंगे तो उसमें भी y लगा रहेगा, अगर x इक्वल टू समथिंग करेंगे तो उसमें भी x लगा रहेगा। तो कहने का मतलब कि x इंटायरली y के टर्म्स में या y इंटायरली x के टर्म में अगर एक्सप्रेस ना हो और उस केस में हमें उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना हो तो क्या करेंगे? नथिंग टू वरी, अगेन चेन रूल वर्क हियर। हम लोग इसमें सिर्फ चेन रूल का वर्क काम करेंगे। कैसे करेंगे आप जस्ट उसको, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया भी उसी तरह से, जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया वी आर गोइंग टू, हालांकि ये क्वेश्चन एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, फिर भी मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ डायरेक्टली। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ 2x, डी डी एक्स ऑफ 3y एंड डी डी एक्स ऑफ साइन x। 2x का 2, 3y का, इफ यू थिंक y इज एज x तो 3x का क्या होगा? 3y 3, बट सिंस y इज अदर देन x सो यू शुड राइट dy बाई dx। यहाँ पर 2 अलग और ddx ऑफ x, dx ऑफ dx that is 1, dy by dx that is dy by dx, and what is the differentiation of sine with respect to x? That is cos x. So cos x 3 dy by dx, cos x minus 2. So what is dy by dx? It is 1 by 3 cos x minus 2. इस तरह से dy by dx की वैल्यू हमने निकाल लिया। कोई और क्वेश्चन इसी तरह होगा, मान लो जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इक्वेशन इज गिवन, फंक्शन हमें इसमें से बनाना है। सो अगेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड equal to ddx of right hand side. Now here the left hand side is expressed in the terms of 3. So write down ddx of x square. I am explaining in detail. ddx of x into y. ddx of y square is ddx of 100 constant, that is 0. Okay. Now what is the differentiation of x square with respect to x? It is 2x. Now here it is product of two different functions, x into y. Y is also a function. So what we have to do, x को पहले रखा और y पे डिफरेंशिएशन किया तो dy by dx, फिर y को रखा प्रोडक्ट रूल और x का डिफरेंशिएशन किया ddx ऑफ x। ये हमारा पहला पार्ट। देन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? एक्चुअली हियर इज y स्क्वायर, बट वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। तो इट इज 2x, सो राइट डाउन 2y, but since y is other than x, so chain rule dy by dx, and here 0. In the whole expression you will find at two places dy by dx. उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो, that x plus 2y into dy by dx, और बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, 2x minus 2x, y into ddx of dx मतलब 1, that is minus y.
सो व्हाट यू फाइंड dy by dx? dy by dx इज नथिंग बट माइनस अगर हमने कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई एंड x प्लस 2y, ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 का 100 अगर दिया हुआ है तो उसमें dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो माइनस ऑफ 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y। क्लियर? You can take one more example. I am taking the question about it. Sin square x plus cos square y is equal to 1. Differentiate with respect to x. As you are required to find dy by dx, so always जो नीचे वाला होता है उसी के about हमें differentiate. Sin square x ddx of sin square x plus cos square y is ddx of 1. Okay, then ddx of sin square x plus ddx of cos square y is equal to ddx of constant is 0. Now again sin square x का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, sin x का है बट स्क्वायर का नहीं है, तो जस्ट थिंक इट sin x as x. तो what is the differentiation of x square? I am using directly chain rule here. What is the differentiation of x square? It is 2x. So what is the differentiation of sin square x? It is 2 sin x. हमने sin x को x समझ के रखा हुआ है, बट अगेन दिमाग में ये भी रखना है कि sin x को हमने समझा है x, sin x एक्चुअली x है नहीं, तो sin x चूंकि x नहीं है तो फिर उस पर हमारा चेन रूल लगेगा ddx of sin x. In the same way again it is x square, so 2x यानी 2 cos y, but since cos y is not x, so ddx of cos y equal to 0. Now 2 sin x, and what is the differentiation of sin x with respect to x? This is nothing but cos x. Okay, 2 cos y. Now cos y को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, अगेन यहाँ पर वो सेम वेरिएबल नहीं है, तो cos y को आप cos x, अब ये स्टैंडर्ड है, cos y को आप cos x समझो, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो cos y का क्या हो गया माइनस साइन y. बट सिंस y इज नॉट x, सो चेन रूल अगेन अप्लाई. सेकेंड, अब वो चेन रूल को हम प्रॉपरली पहले कहते कि इसको y मानते, कि यू स्क्वायर को cos y मानते, cos x मानते, फिर x को y मानते, उस पर जाते तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है. सो वी आर गोइंग टू डू डायरेक्टली इज इक्वल टू 0. Now in the whole process we have dy by dx here. So keep it in what side? Since यहाँ माइनस है तो इसको एक तरफ ले जाते हैं. You will find that 2 sin y cos y dy by dx. इसको एक्चुअली उधर ले गया, इसको इधर ही छोड़ दिया, तो दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया. ठीक है. Now you will find here it is a standard formula. This is sin 2y, this is sin 2x. Okay. So what is dy by dx? So dy by dx is, आप इसको लिख सकते हो sin 2y dy by dx equal to sin 2x. So what is dy by dx? dy by dx is sin 2x by sin 2y. Okay, this is the formula, sin 2x by sin 2y. So this is the 8th question of the exercise 5.3. We are doing exercise 5.3 implicit function, and this very particular exercise contains the differentiation of inverse, some standard inverse trigonometric function. So I think we have done enough today. We can move for the next is some exponential and logarithmic function. So I will take 1 or 2 example here for inverse. You will find the use of that one. How can you find the differentiation? And you have to learn about the differentiation as well, as because if you find the standard form of the differentiation, as you know that the dx of x is 1, then certainly is integration is the inverse process of differentiation. As you know that every function need not be differentiable, in the same way every function need not be integrable.
So here the very first question, that question number 18, I am taking one question only here today. Y equal to tan inverse 3x minus x cube 1 minus 3x स्क्वायर, और इधर कंडीशन दिया हुआ है 1, ये देना ज़रूरी है, नहीं तो ऑब्जेक्शन हो सकता है कि भाई ये हर जगह डिफाइन थोड़ी ना है, ये हर x के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए एक कंडीशन दिया जाता है। इस कंडीशन से बाहर हम चाहें तो इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ा है वहाँ से डायरेक्ट हम ले सकते हैं कि इसकी वैल्यू -3 tan इनवर्स x होता है। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करोगे, ध्यान दोगे, द होल एक्सप्रेशन बिकम्स 3 of tan इनवर्स x. So y is 3 of, तो डायरेक्टली वी कैन डू ddx of y is nothing but this one. Since 3 is constant, so 3 into ddx of tan inverse x. And what is tan inverse x का differentiation? It is 1 by 1 plus x square. So answer is 3 by 1 plus x square. If you know the conversion, if it is of 1 marks में क्वेश्चन आएगा अगर लिखने के लिए कि find differentiation of this, you do like this. डायरेक्टली ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तब ये पूरा तब भी चलेगा. बट इफ इट कम्स इन 3 मार्क्स, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू डू दैट let x is equal to tan थीटा. ठीक है, तो tan थीटा जब ले लेंगे तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स x. सो हियर वी फाइंड दैट tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan cube theta 1 minus 3 tan square theta. And you know this is the standard formula of tan 3 theta, tan inverse of tan 3 theta. So tan inverse of tan becomes gap, गोल हो गया, we are left with 3 theta. We are left with 3 theta. And theta is what? 3 tan inverse x. Y in terms of x. So dy by dx is 3 into ddx of tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x का ddx क्या होता है? 1 by 1 plus x स्क्वायर. सो आंसर इज, ऐसे भी आप बना सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो. एम आई राइट? सो दिस इज टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. नेक्स्ट डे विल फाइंड सम मोर क्वेश्चंस and some more types also. Okay, thank you, have a nice